Presently, if we talk about the type of infections what we are getting lot of viral infections, especially past 2 weeks. Mostly they are either influenza type A, type E, or in some of the babies it's RSV. RSV mainly affect the small babies less than 1 year, and influenza can affect any age group. Now these are of major concern. Now many of the tests, many of the patients who are coming with viral upper respiratory tract infection, we are not getting them tested. Likely they may be COVID or they may not be COVID. They may be the minor form of RSV or influenza, right? Now, having said that, we have enough experience about the Omicron, that is the father of the present strain. They were always been mild, never let the pneumonia happen to the patient. So most of time, unless patient is healthy, means unless in fact patient is not having any comorbidity, that doesn't lead to lot of problems. If we compare influenza and Omicron, whether it was the initial Omicron which started in 2022 or whether it's the present Omicron, the subvariant, less likely they are going to cause problem not only in pediatric but also in adult. Unless there is some comorbidity like COPD, like severe poorly controlled asthma, patient on prolonged steroid, patient on cardiac failure, patient on some respiratory disease or spinal disease, or some poorly controlled diabetes and hypertension, or old age like 80 plus. What we have witnessed, they normally confined to the upper airway. Upper airway means nose, throat. That doesn't lead to lower respiratory tract infection unless there is already comorbidities. Sir, if I talk about the children getting, the COVID positive children, they're getting their test done or not? If you talk about all over India, yes, pediatricians are getting COVID patients, but the number of tests which we are getting as a pediatrician, whether in Delhi or elsewhere, the number of tests are very less. Very likely these patients are not warranting tests because they are not suffering from disease which require admission. Most of the tests are done when we require admission. Same is in Delhi, because till now we are getting most of the patients who require admission is mainly in influenza or RSV. So that's why if you presently if we have got around 40 patients, almost 15 patients are suffering from influenza or RSV rather than COVID. Though COVID is done automatically when we go for the pan 22 viral testing, so that test is included. Till now in North India, especially in Delhi, COVID may be there, but it is not clinically significant for us. So what are the precautionary measures that need to be taken for children? Yeah, it is in general, because pollution is there. Whenever pollution is there, these viruses become little bit more virulent. So whether it's influenza, whether it's RSV, the patients who are suffering from comorbidity, especially infants and elderly age group with and without comorbidity, should be wearing the mask. That is the only precaution we can take, and especially triple layer mask should be sufficient. Don't go to very crowded places. New Year is on the head. Very likely New Year is, say, next 2 days there will be lot of overcrowding, lot of parties. Be little bit extra cautious, especially if you are suffering from comorbidity, lung comorbidity, or anybody in the family member and the family is suffering from comorbidity, because you are going to carry, you may not get affected, but that person can get affected by the same infection which you may carry from that party. So if a child is asthmatic, then risk for the... I'll say that for an asthma, it can lead to little bit exaggeration of asthma. Many of the asthmatic do suffer from allergic rhinitis. So this Omicron has got propensity to get infected in the nose and produce obstructive symptom rather than the lower respiratory tract obstruction. So many of these patients, which I have also witnessed, many patients who are suffering from allergic rhinitis are getting trouble more than just an asthma. So it's a combination of upper respiratory tract and lower respiratory tract as compared to any other viral infection. They have got propensity to exaggerate the asthmatic attack. So one should be very particular about the inhalers. If somebody is on prolonged inhaler and if you develop upper respiratory tract infection, they may require to increase the dose. So one is the nutrition, second is the inhalation, and third, of course, if somebody is suffering from acute viral infection from the family,
be away from that, because the same infection can trouble you more than any normal human being. अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में इस समय देखा जाए तो सर्ज आया हुआ है वायरल इन्फेक्शंस का। चाहे जिसको एस्थमा था या जिसको नहीं भी था, किसको कोमोबिलिटी नहीं थी, तो भी उसके अंदर फीवर हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये डोमिनेटिंग सिम्टम है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें, जो हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं और दूसरे ओपीडी पेशेंट्स, एडमिटेड पेशेंट्स में 90% एडमिशन्स उनको इन्फ्लुएंजा ए या बी के कारण है। कुछ पेशेंट्स में आरएसवी है। अभी तक हमारे पास कोविड के कारण किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पिछले हम 2 वीक से बात करें, जब से हमें मालूम पड़ा है कि एक नया स्ट्रेन ऑल ओवर वर्ल्ड डोमिनेटिंग है। अब बात करते हैं ओपीडी की। ओपीडी में जो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या सीरियस नहीं है या सीवियर नहीं है, उनमें हम ऑलरेडी टेस्ट नहीं करवा रहे। हो सकता है सर्कुलेशन में हो, जैसे कल आपने रिपोर्ट किया कि एक पेशेंट इस नई स्ट्रेन का पाया गया, एक पकड़ा गया है, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 100 या 200 सर्कुलेशन में ऑलरेडी होंगे, और ये वायरस फैलता भी है। तो ये मानना पड़ेगा, और इनफैक्ट हमें भी पहचानना चाहिए कि बहुत जल्दी काफ़ी पेशेंट्स को एक वायरल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, उसमें कोविड का एक मुख्य योगदान हो सकता है। बट इन जनरल अगर हम पूरे और या राज्यों से ही बात करें, हमारे जो मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो डील कर रहे हैं। जैसे गुजरात में काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके बच्चों को खुद को कोविड हुआ है, उन्होंने टेस्ट कराया तो कोविड, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए उनको कोविड टेस्ट नेगेटिव चाहिए था, उन्होंने कराया तो पॉजिटिव निकला। ऐसे ही साउथ में और ईस्ट वेस्ट में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखे जा रहे हैं। उनकी सीवियरिटी है और जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन की सीवियरिटी थी ऑलमोस्ट सेम है। ये वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेनली अफेक्ट करता है, लोअर को नहीं, तो इसलिए ज़्यादा सीवियर निमोनिया इससे डायरेक्टली नहीं होता। सर क्या प्रिकॉशन लीजिए? प्रिकॉशन इन जनरल है। अब हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही है, ओवर क्राउडिंग होगी, पार्टीज़ होगी, तो उसके लिए आप उस जगह पे ना जाएं। स्पेशली अगर आपको कोमोबिलिटी है लेस देन 1 ईयर, मोर देन 75-80 ईयर्स, स्पेशली अगर आपको कोमोबिलिटी ऑलरेडी लंग्स अफेक्टेड है, ऑलरेडी हार्ट अफेक्टेड है, ऑलरेडी ब्रेन अफेक्टेड है किसी डिसीज़ से, इन बच्चों में या इन एडल्ट्स में ज़्यादा खतरा है सीवियरिटी होने का, जैसे इन्फ्लुएंजा या किसी और वायरस में। तो ऐसे घरों में लोग ना बाहर जाएं जहाँ पे ऐसे बुज़ुर्ग रहते हैं, ऐसे बच्चे रहते हैं, नहीं तो वो इन्फेक्शन पकड़ के लाएंगे तो इन्हीं को देंगे। इन बच्चों को और इन बुज़ुर्गों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। किसी को घर में इन्फेक्शन है तो इनको दूर रखें, और एक सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क पहना सकते हैं, डेट शुड बी सफिशिएंट।